Aditya, you start with the first statement of question number 2. Go ahead. Correct entry, wrong entry, rectifying entry. Correct entry, rent account debit to cash account 700. The wrong entry is Ravi account debit to cash account 700. And rectifying entry would be rent account debit to Ravi account 700. Correct. Now just observe what will be the situation with the second entry. Because here the recording is in wrong subsidiary book, that too with the wrong amount. And both these errors you are expected to rectify. Correct or not? इस तरह का एक एग्जाम्पल एक्चुअली मैंने किया था. Recording in wrong subsidiary book with the wrong amount. Understand and observe. My correct entry should have been Ramakant account debit to sales account 580. Correct, Rapsana? My wrong entry is purchase account debit to Ramakant account 850. Correct? पहले 580 रिकॉर्ड करना चाहिए था, अब मैंने 850 रिकॉर्ड कर दिया. तो आप just observe the situation. You need to cancel what has gone wrong and you need to give the effect what has gone correct or not, or what is expected to be correct. That is what we call as rectification. If you remember, I told you the procedure that you need to pass the rectifying entry in such a way that the combined effect of wrong entry and rectifying entry should be the correct entry. Barabar? So now if you consider your wrong entry is what? Purchase to Ramakant. ये entry पूरी तरह से cancel करनी है हमको, क्योंकि ये दोनों के दोनों effect गलत हैं. And at the same time हमें correct entry भी pass करनी है, which is Ramakant account debit to sales account. So what am I expected to do then? I will be passing my rectifying entry as Ramakant account debit by rupees 580 plus rupees 850. Why 580 plus 850? 850 debit to cancel the wrong credit. Yes or no? 850 debit to cancel the wrong credit and 580 debit to give the correct effect. So total debit that will go into Ramakant's account will be 1430. To purchase account, क्योंकि purchase को तो हमने जबरदस्ती डेबिट कर दिया था, purchase तो हुआ ही नहीं. And to sales account, which is my correct effect. मैंने सिंपली क्या किया आपको पता है? रॉन्ग एंट्री का रिवर्स एंट्री पास किया, करेक्ट एंट्री को भी पास किया और दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दिया. रॉन्ग एंट्री का रिवर्स मतलब क्या? रमाकांत अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 850. माय करेक्ट एंट्री इज रमाकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 580. इन दोनों का मैंने बना दिया सैंडविच. एंड दैट सैंडविच एंट्री इज व्हाट? रमाकांत अकाउंट डेबिट 1430 to purchase account 850 to sales account 580. Did you people understand it now? चलो नेक्स्ट वन. प्रतीक्षा ट्राई करेगी. Repair to furniture of 300 has been debited to furniture account. भावना बहुत होशियार है, उसको मालूम था कि आज क्वेश्चन आंसर होने वाला है, इससे अच्छा अटेंड मत करो. Renu, you can go for it. Yes, go ahead, Renu. Repairs to furniture account.
What rectifying repairs to entry? furniture account debit to cash account. Correct entry. Acha, repairs account debit to cash account 300. Okay. Wrong entry. तेरी आवाज नासे वालों ने पकड़ ली, वो इधर भेज ही नहीं रहे। Yes, go ahead. ये किसी को सुनाई दे रही है उसकी आवाज? Sir, can you hear now? Yes. We can hear now. No debit to furniture account. अरे नो डेबिट कैसा बेटा? डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बोला है ना। So furniture account debit to cash account. Wrong entry also. Okay, I'll go for that. Don't worry. Correct entry should have been repairs account debit to cash account 300. Correct. So wrong entry should have been furniture account debit to cash account because debited to furniture account बोला हुआ है. Correct. And therefore my rectifying entry will be repairs account debit to furniture account rupees 300. Did you get it? Yes or no? Jayashree? Utsa Sangshilka. Total of sales return book is wrongly taken more by rupees 120. Overcasting of sales return book. Correct entries. Sales return account debited to customer's account. That's fine. There is no need to pass the correct and wrong entry when it comes to the casting errors. You need to directly pass the rectifying entry. Suspense account debit to sales return account. Correct. Absolutely correct. Because sales return book was overcast, means sales return account was debited more by rupees 120. अब ज्यादा का डेबिट कैंसिल करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा एंड देयर इज नो अदर अकाउंट गेटिंग अफेक्टेड, देयरफॉर जित जित कमी तिथ तिथ आमी. So rectifying entry will be suspense account debit to sales return account 120. करेक्ट है? संयोगिता एकदम स्टिल पोज में क्यों बैठी आज तू? सर आज ये सब सुन के मैं स्तब्ध हो गई सर. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है और रुक क्या रहा है. होता है. रेक्टिफिकेशन में ऐसी गिल्लियां सबकी उड़ती हैं. But once you understand this topic well, once you start doing practice of this topic, in fact fundamentals है. आप सब्सिडियरी बुक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते जाओ, आपके आंसर्स करेक्ट होते जाएंगे. You will not be having any difficulty when it comes to any type of topic after this. You'll be having the reference of this in partnership. You'll be having the reference of this in consignment. You'll be having the reference of this in final accounts. You'll be having the reference of this in NPO topic. तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द फाउंडेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. क्योंकि हो सकता है आईसीआई फाइनल अकाउंट ना पूछे, उसकी जगह एनपीओ पूछ ले, एनपीओ की जगह पार्टनरशिप पूछ ले. दिस ऑल इज पॉसिबल, बट रेक्टिफिकेशन को रिप्लेसमेंट आज तक के नहीं देखा मैंने. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक has been asked in almost क्या every exam of CA foundation, and that too ranging from 6 to 12 marks. So it commands around 10% of your paper, 5 to 10%. बड़ा नंबर है. And once you understand it well, you have this as a cash marks. And that's why I'm just taking this in the basic batch also. This is the first time that I've taken this in the basic accounts ka batch.
अदरवाइज रेक्टिफिकेशन का टॉपिक कभी मैं बेसिक अकाउंट के बैच में नहीं लेता था. ऑलराइट, Navinya, check of 185 issued to Mr. Ashok has been wrongly entered in the cash column of cash book. तुम्हारी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है बच्चा. हाँ बात कर. नहीं, रहने दे भाई, तू टाइप ही कर. संयोगिता तू ट्राई करेगी? नो सर. सिद्धि, लिख के हो गया तेरा? Ashok account to bank account should have been the correct entry. ये नाविन्य ने लिखा है, बराबर ना नाविन्य? Yes, what is the wrong entry then? आ रही है, टाइप कर रहा है भाई. सॉरी यार नाविन्य, मैं भाई बोल दिया तेरे को, लोग गलत समझेंगे. आदित्य और नाविन्य मेरे को रोज याद दिलाते हैं, सर यहाँ हमारी वैल्यू अलग है सर. हियर वी आर द स्केर्स कमोडिटी. और सुचरित सर ने स्केर्सिटी जिस लेवल में सिखाया है ना हमको, है ना, कुछ तो इंग्लिश में डायलॉग होता है ना, स्केर्सिटी इज द समथिंग ऑफ समथिंग. इन्वेंशंस के लिए स्केर्सिटी चाहिए होती है, समथिंग लाइक दैट. स्केर्सिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. नाविन्य तू टाइप कर रहा है कि बेटा घर से बना के भेज रहा है? बेटा आंसर बनाना है, चकली चूड़े हमारे अब तक के खत्म नहीं हुए. सिद्धि बोल, तेरा लिख के हो गया, बोल. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रेक्टिफाइंग एंट्री. रेक्टिफाइंग एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. रॉन्ग एंट्री क्या आएगी? रॉन्ग एंट्री. रेक्टिफाइंग एंट्री करेक्ट है तेरी. अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. करेक्ट. सॉरी, कैश अकाउंट. हाँ बराबर है, इतना भी कंफ्यूजन क्रिएट मत कर जबरदस्ती में. करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Wrong entry is Ashok account debit to cash account. Debit to cash account. And therefore the rectifying entry is cash account debit Cash to account bank debit account. to bank. पहले पढ़ा. नाविनी तू वापस आया क्या? गया तो बेचारा चला ही गया. सर मैं नाश्ता करके ही वापस आऊंगा. असो रफसाना बोलती है सर आप ऐसे नाश्ते के बीच में बातें मत किया करो सर, बहुत भूख लगती है. ऐसे तो टाइम ऐसा है, मैं ऐसे एक्सप्रेशन ही ऐसे दे रही थी ना कि सर अब नाश्ते की बातें मत करो सर प्लीज. असो ठीक है. नहीं, कुछ बंदे ना बाद में सोचते रहते हैं कि यार मास्टर का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होता है. मेरे सामने 9 चेहरे हैं अलग अलग, तो सबको ध्यान से देखते रहता हूँ पूरा टाइम. काम ही कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट पढ़ते से समझ आ जाता है कि इसका करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री क्या आएगा, तो उसके बाद दिमाग कहीं लगाना ही नहीं पड़ता है ना. चलो, गुड्स
returned to Mr. Pathak as they were defective, rupees 280 were not recorded in the books. अब इससे अच्छा तो कोई rectifying entry हो ही नहीं सकता है. Complete omission, गजनी error. Complete गजनी है बंदा, दोनों इफेक्ट नहीं दिए. हाँ, अगर रिकॉर्ड किया पोस्ट नहीं किया मतलब पार्शियल गजनी, रिकॉर्ड ही नहीं किया तो कंप्लीट गजनी. Right. So correct entry should have been what? Pathak account debit to purchase return account rupees 280 because goods returned to लिखा हुआ है. Correct. Wrong entry, no entry because you have not recorded that in the books of accounts at all. And so your rectifying entry will be Pathak account debit to purchase return account 280. Correct है? पहले पढ़ रहा है नहीं? Next one. Commission received rupees 625 were recorded in the journal proper but not posted at all. Recorded in journal proper. They have very specifically mentioned. In this case, we are not supposed to pass any rectifying entry for that, but we only need to do the posting of that. We only need to give the posting effect. If this error is detected after preparation of trial balance, then again will be required to pass the entry as what? Cash account debit to commission account. क्योंकि ये recorded in journal proper बोला हुआ है, मतलब they are not maintaining the cash book as well. Are you understanding my point? But if this transaction is detected before preparation of trial balance, you won't pass any entry for that again, क्योंकि entry तो pass हो चुकी है. You have to only give the effects in the respective accounts. Write down the note on that. Statement number 2. If this error is detected prior to the preparation of trial balance, then no entry will be passed for it. No rectifying entry will be passed for it. Then no rectifying entry will be passed for it. But effects in ledger accounts will be given directly. But effects in ledger account will be given separately. Next point. If it is detected after trial balance, then rectifying entry will be cash account debit to commission account. Cash account debit to commission account. Right? Okay. The next one, purchased machinery from Hindustan Machinery Limited, rupees 9,000 on credit was omitted from the books of accounts. Again, complete omission. And as it is a complete omission, we'll simply pass the entry as what? Machinery account debit to Hindustan Machinery Limited, because it is purchased on credit or not. Rupees 9,000 will be the rectifying entry directly.
machinery account debit to Hindustan Machineries Limited will directly be the entry passed. Next, additional capital of 2000 introduced by proprietor in the business was recorded in cash book but not posted to capital account in the ledger. Correct entry should have been what? Cash account debit to proprietor's capital 20,000. Wrong entry is cash account debit to no credit. क्योंकि नॉट पोस्टेड टू लेजर बोला हुआ है, मतलब कैश को डेबिट किया पर लेजर को क्रेडिट नहीं किया, कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया. Therefore wrong entry is cash account debit to capital account, cash account debit 20,000 to no credit. And therefore my rectifying entry will be what? Suspense account debit to capital account rupees 20,000. Suspense account debit to capital account rupees 20,000 will be the rectifying entry. Correct or not? Next. Cash received from Patel, though recorded in cash book, was not posted in his personal account in the ledger. Similar one. Cash received है पर posting नहीं की. Correct entry should have been cash account debit to Patel account rupees 3,300. Wrong entry is cash account debit to no credit, क्योंकि पटेल को पोस्ट नहीं किया हमने. And therefore the rectifying entry will be suspense account debit 3,300 to Patel account 3,300. कोण आणि कुठं ते माहित नाही, पण पटेल हे नक्की आहे. बरोबर की नाही? असो, काय आता तुम्ही जीबी सरांच्या सानिध्यात राहतात म्हणून मला वाटलं की हे समजेल तुम्हाला. असू दे. Goods sold to Kishore rupees 6565 on credit was not posted to his personal account. मतलब सेल्स को क्रेडिट किया पर किशोर को डेबिट नहीं किया. करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6565. Wrong entry, no debit to sales account 6565, and therefore the rectifying entry will be Kishore account debit 6565 to suspense account 6565. Correct? Hayana? Yes. So question number 4, 5 and 6. Question number 4, 5 and 6 are what? होमवर्क. कितने होशियार है हमारे बच्चे, एकदम फटाफट समझ में आ जाता है. मास्टर ने सीक्वेंस में नंबर बोला मतलब अब आ गई आंख पे. So these 3 questions are homework and I know you'll be doing it with 100% sincerity and you'll do it. हाँ, ऐसा बोलना चाहिए, you will do it and you will do it with the sincerity. That 200%. And we'll be checking those questions tomorrow morning at 9:15. Right? So we'll meet tomorrow. Thank you.